Welcome students, welcome everyone. Today we will study about bromatometry, which is a class of redox titrations which uses bromide, which uses a system of bromate, bromide and bromine. What is this system of bromate, bromide and bromine? I will tell you in detail later on. For a specific understanding and important understanding, peculiar understanding of bromatometry, we shall know redox titrations first. As I have told you earlier also, I have taught you in earlier lectures also, redox titrations are. So, what are redox titrations? Redox titrations are a class of titrations which uses oxidants and reductants, where reagents are oxidants and reductants. What are oxidants and reductants now? Oxidants are also known as oxidizing agent and reductants are also known as reducing agent. Now the question comes, what are they? Oxidizing agents are the agents which oxidizes the other reagent and themselves get reduced, and reducing agents are the agents which reduces the other reagent and themselves gets oxidized. Okay. So now we will have a look on bromatometry. Oxidizing agents and reducing agents are the reagents which reduces the other compound and themselves gets oxidized, and oxidizing agents are the compounds which oxidizes the other compound and themselves gets reduced. So what are redox reaction? What are redox reactions? Redox reactions or redox titrations are as a whole a type of reaction in which reduction and oxidation takes place hand in hand or simultaneously. The process, both the processes oxidation and reduction takes place simultaneously. What do you mean by the term simultaneously? Simultaneously means साथ साथ, एक साथ. In redox reactions, both oxidation and reduction reactions are complementary to each other. They are complementary. Complementary means पूरक, एक दूसरे को complete करने के लिए essential है. If one of the reaction will get stopped, then automatically the other reaction will automatically get stopped. If there is no such condition or no such reaction in which only and only oxidation takes place, in the same way there is no such condition in which, no such reaction in which only and only reduction takes place. So what I mean to say, students, what I want to tell you कि oxidation and reduction दोनों reactions ही हमेशा साथ में होंगी. They will be held all together. They will be held all together. हमेशा साथ साथ होंगी, हमेशा coincide करेंगे, simultaneous होंगे. अगर किसी मीडियम में, किसी रिएक्शन फ्लास्क में ऑक्सीडेशन हो रहा है, if you are saying like that, then there must be a reduction process going on. अगर वहां पे रिडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली इट विल गेट स्टॉप्ड. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट और व्हाई डिड इट हैपन? ऐसा क्यों है? बिकॉज द रिएक्शन में, आपका रिडॉक्स रिएक्शन में जब भी आपका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन इज एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो जब जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट होंगे तो वहां पे कैसे चार्जेस इंक्रीज होंगे? पॉजिटिव चार्जेस, राइट? पॉजिटिव चार्जेस. सो oxidation can be termed, oxidation can be defined in various ways. Electron elimination or elimination of electrons is oxidation. Increase in positive charges, positive valency in a species is oxidation. Okay. So in both the ways, the charges, positive charges in the species, in the reagent are increasing and the electron are eliminated from the particular reactant. Then those particular electrons which are eliminated in that particular reaction, where they go? Where did they go? They go to the another reagent or another reactant and get reacted with them. That's why the number of electrons which are eliminated, which are being released by one of the reagent, is being reacted up by another reagent in the same time, simultaneously, at the same time. जो इलेक्ट्रॉन एक रिएजेंट से निकाले गए हैं, एक रिएजेंट ने रिलीज किए हैं, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय अनदर रिएजेंट.
or get attracted by another reagent, they react with the another reagent, reagent 2, and get it reduced. That's why एक reagent oxidation कर रहा है और दूसरा reagent उन्हीं same electrons के साथ react करके उनको gain करके reduction कर रहा है. Then what is reduction now? We can summarize it very well. Reduction is gaining of electron or reacting up with electron. Gaining of electron. If a species gains up an electron, then what charges does it gain? किस तरह का charges आता है उस species के पास जो electron gain करता है? Negative charge. Yes my dear, negative charge. तो negative charges increase होंगे जो reduction कर रहा है reagent उसके ऊपर. So that's why same number of electrons, we can say it like that, same number of electrons are transferred from reagent 1 to reagent 2. And yes students, reagent 1 is that reagent which undergoes oxidation and reagent 2 is that reagent which undergoes reduction, and these both processes are going hand in hand or they are occurring in the reaction flask simultaneously. That's why the same number of electrons are changing or the same number of electron changes takes place for both the reagent. जब हमें कभी उनका equivalent weight निकालना है, I have told you earlier also, the formula to calculate equivalent weight of oxidants and reactant is molecular weight divided by number of changes in electron per molecule. That is very important, per molecule, number of changes of electron per molecule. So number of changes of electron per molecule, जितना change oxidation में हो रहा है, same number of electron will be changed in reduction also, because एक reagent उन्हीं number of electrons को निकाल रहा है and it is gaining positive charge, and another reagent उन्हीं electrons को capture कर रहा है या gain कर रहा है and that is gaining negative charge. So these are the redox reactions, these are the redox titrations. So bromatometry now comes to bromatometry. Bromatometry is a class of titration, is a class of redox titration in which we determine the amount of bromine. We determine the amount of bromine with the system of bromine is to bromide, okay, with the help of a bromate ion. This is known as bromatometry. Because हम लोग bromate ion use कर रहे हैं, as bromate ion is used, that's why we are calling it as bromatometry, okay. So bromatometry is a type of redox reaction, redox titration process in which estimation of bromine is done very well with the system of bromine to conversion of bromine to bromide ion. Potassium bromate is used in this system or in this type of titration, which is very powerful oxidizing agent which gets reduced smoothly to bromide ion, and this in the presence of HCl, that particular bromide ion get converted into bromine reaction into bromine solution and in the presence of acidic pH. So that is altogether about bromatometry. Bromatometry में क्या होता है? First of all, अभी आपको reaction की help से हम आपको बताएंगे. First of all, in presence of this potassium bromate, since it is a powerful oxidizing agent, तो ये आपके ब्रोमाइड को कन्वर्ट करता है ब्रोमीन में, ओके, ब्रोमाइड को कन्वर्ट करता है ब्रोमीन में in presence of acidic medium, acidic pH, okay. This is the fundamental which is being used and 3 conversions are being there. Let us see the reaction, तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. Then the indicator at the end point changes from red to slightly yellow color, okay, slightly yellowish color का हो जाता है आपका, seems colorless, a bit pale yellow which seems colorless, that depicts the end point. End point पे वो reaction हो जाएगा आपका, ठीक है. Mostly any of the acidic indicator can be used as indicators. Any acidic like means methyl orange, methyl red. So suppose methyl orange if you use, since आपका end point पे none of the HCl is being left, ठीक है, सारा HCl जो है वो KCl में convert हो गया है potassium chloride में. So none of the HCl is being present now. The reaction is entirely neutral now. जो reaction आप medium आपका अभी तक acidic था, because of this H plus ion, ये H plus और ये all together reaction है. This is the all together reaction.
or we can call it as final reaction. This is the final reaction. This one is the final reaction. Okay students, this is the final reaction. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं easily, you can very well see on your screens कि यहाँ पे जो H plus है, जो हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन है, which is coming as a acidic medium, which is coming from the acidic medium, or which shows the acidic medium, presence of acid in the medium, is not at all present in the final reaction on product side, is not at all present there. That's why, that means all of the acidic medium or all the protons are being consumed up. All the protons, all the hydrogen ion, all the acids are being consumed up. तो जब आपके सारे एसिड कंज्यूम हो जाएंगे रिएक्शन मिक्सचर में, देन आपका रिएक्शन मिक्सचर जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, एसिडिक मीडियम खत्म हो जाएगा आपका. दैट्स वाई जो आपका मिथाइल ऑरेंज है, जो अभी तक एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है, इन एसिडिक मीडियम मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर, और आपका जो न्यूट्रल है उसमें आपका कलरलेस हो जाएगा. तो दैट शोज द कमेंसमेंट ऑफ एंड पॉइंट एंड कंप्लीशन ऑफ योर रिएक्शन. तो यहाँ पे आपका जो कलर चेंज होगा वो होगा रेड टू येलो, रेड टू पेल येलो, यू कैन टेल दैट, यू कैन से दैट रेड टू पेल येलो. तो कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर विच वी यूज इज मिथाइल ऑरेंज, विच चेंजेस फ्रॉम रेड कलर टू येलो कलर और पेल येलो कलर, विच इज रिवर्सिबल, एंड द रिएक्शन at the end point of the titration free bromine appears. यहाँ पे free bromine आ जाती है. तो this is a system, a changing system sorry, it is a changing system of ion in which bromate is converted into bromide. This bromide is converted into bromine. This is a two-step reaction. Two steps reaction. First of all, bromate is converted to bromide salt, bromide ion, by reaction with the acidic medium, by reaction with the acid HCl present in the medium, which is shown as 6H plus. HCl which will be taken in excess, that's why red color रहेगा medium का, क्योंकि pH आपका पूरी तरह acidic है. Then in next step, this bromide ion will again react with the bromate, because आपका HCl भी एक्सेस में है और ब्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट भी एक्सेस में है, दोनों चीजें एक्सेस में है. तो ये रिएक्शन के बाद भी आपका दैट मीन्स पोटेशियम ब्रोमेट बच जाएगा. इसीलिए द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि आपको पोटेशियम ब्रोमेट भी एक्सेस में लेना है, ताकि ब्रोमाइड आयन बनने के बाद भी दोबारा ब्रोमाइड आयन ब्रोमेट के साथ रिएक्शन कर सके इन द सेम मीडियम, एसिडिक मीडियम, विच इज शोन बाई 6H plus. Now it forms bromine at the end point, bromine, and all the HCl, all the जो acidic medium आपका HCl था, it is being used up and converted into KCl. तो जो medium है आपका purely neutral हो चुका है और slightly towards basic side हो चुका है. इसीलिए मिथाइल ऑरेंज आपका एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है, और आपका जो बेसिक मीडियम है बिल्कुल प्रॉपर येलो, तो बिल्कुल प्रॉपर येलो नहीं आएगा बिकॉज इट्स स्लाइटली ऑन न्यूट्रल साइड. तो आपका पेल येलो कलर ऑब्जर्व होगा एट द एंड पॉइंट. तो दिस इज द प्रिंसिपल एंड द रिएक्शन एंड टेक्निक ऑफ द ब्रोमैटोमेट्री. नाउ मूविंग अहेड, एप्लीकेशंस ऑफ ब्रोमैटोमेट्री. It is widely used in assay of isoniazid, okay, determination of hydroxylamine, determination of arsenic in antimony. Okay, so the application is also very, applicability is also very nice. Then redox titrations. Now we need to know about something about redox titrations, redox indicators also. The concentration of one reagent can be measured easily by other reagent because there is a sharp distinction between the oxidized state and reduced state. And as we all studied also, oxidation and reduction process goes hand in hand, goes simultaneously in a redox titration. Therefore, a proper distinction should be there in the reduced form and oxidized form of any reductant or any oxidant. There should be a very proper distinction. And if that distinction will not be there, how you guys or you people will able to know
कि our endpoint has been reached, has been achieved. To know that a proper redox indicator should be there, a proper, a good, an ideal, a specific redox indicator should be there. So now we will study what is redox indicator. A redox indicator can be defined as a substance that can be reversibly oxidized as well as reduced, having different color in individual oxidized and reduced form. So जो आपके redox indicators होते हैं उनका reduced form में एक different color होगा and oxidized form में एक different color होगा. Okay, when according to the reaction medium, oxidation reduction के medium के हिसाब से when oxidized form will appear, will be dominant, then आपको oxidized form का color देखने को मिलेगा, and if reduced form will be dominant, will be dominating, then आपको reduced form का color देखने के लिए मिलेगा. Okay, so these are the redox indicators. These are the substances which have different, entirely different and contrasting color in both the forms, reduced form and oxidized form. For example, example से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. Example KMNO4. तो entirely contrasting color मैंने क्यों बोला? KMNO4 colorless in one medium and entirely permanganate color. Permanganate color means dark, थोड़ा pinkish purple color होता है उसका दूसरे medium में. तो कितना entirely कितना different contrasting colors हो गए, right? Colorless और dark bagni, colorless या फिर bagni pink मिला हुआ color, कितना ज़्यादा बैगनी. परमैंगनेट कलर होता है पिंक और बैगनी का मिक्सचर. ओके, पिंक एंड पर्पल का मिक्सचर. तो कितना कंट्रास्टिंग कलर है, कलरलेस एंड परमैंगनेट कलर, और यू कैन से लाइक दैट डार्क पिंक कलर. ओके, डार्क मैजेंटा कलर. तो दोनों कितने कंट्रास्टिंग कलर हो गए, एक बिल्कुल डीपर साइड और एक बिल्कुल ही कलरलेस, तो बिल्कुल ही लाइटर साइड हो गया है ना. कलरलेस का तो कोई कलर ही नहीं है. तो इस वजह से ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि रिडॉक्स इंडिकेटर यू आर गोइंग फॉर और redox indicator you are choosing for, जो भी आप अपने titration के लिए if you are opting for, then it should be having a contrast color in both the mediums. Otherwise the end point will come and go through, pass by. आपको पता ही नहीं चलेगा कि end point कब आया, because the suitable indicator is not there. Okay, so that's why redox indicator is a substance which shows an entirely different color in oxidized medium and another contrasting different color in reduced medium. Okay, so that is redox indicator. This is the fundamental of redox indicator. Then type of redox indicators are self indicators. First of all, self indicator. A substance is said to be self indicator if it itself acts as an indicator as well as a reagent. इंडिकेटर भी काम भी कर रहा है और रिएजेंट का भी काम कर रहा है, देन दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर इज नोन एज सेल्फ इंडिकेटर. रिडॉक्स कैटेगरी में, रिडॉक्स टाइट्रेशंस में ये बहुत ही अच्छा कैटेगरी का टाइट्रेशन, बहुत ही अच्छा कैटेगरी का एक इंडिकेटर होता है सेल्फ इंडिकेटर. ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सेल्फ इंडिकेटर इफ इट एक्ट्स एज एन इंडिकेटर एज वेल एज reagent in the titration. Example, for example, KMNO4 potassium permanganate is a very good self indicator which act as a self indicator also and a reagent also in redox reaction. और redox reaction क्या होती है उसकी, KMNO4 versus oxalic acid. Okay, KMNO4 versus oxalic acid. Next type of indicator is internal indicator. Internal indicator is a type of indicator which is being added in the solution and takes part in the reaction mixture. And internal indicator आपका जब भी end point आएगा अपना end point के टाइम पे अपना color change show कर देगा and it will show the color change at the end point, और जिससे आपको end point का पता चल जाएगा. Then external indicator, the indicator which is not added in the solution and do not take part in reaction mixture also, it is being added externally. Externally means external indicators आपके तब use में आते हैं when the indicator is capable of reacting with the reagents or having any contradictory effect on the reagent or the reaction, या फिर कोई आपका reaction को proceed करने में इफेक्ट कर रहा है. ओके, रिएक्शन को प्रोसीड करने में इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, रिएक्शन के
प्रोसीडिंग में, रिएक्शन के अंडरगो करने में उसको इफेक्ट कर रहा है, कोई ना कोई अगर रिएक्शन के प्रोसीड करने में अगर वो कोई इफेक्ट डाल रहा है, नेगेटिव इफेक्ट, it forms any chelate, it forms any complex, okay, then in that cases आपका जो indicator है that is not involved in the reaction, that doesn't takes that is not being added in the reaction flask, we kept it externally in any of the petri plates or petri dishes and they are being the reaction mixture जो आपका complex जो बन रहा है आपका reaction mixture reaction flask के अंदर जब आप ब्यूरेट से solution डाल रहे हैं तब वो रिएक्शन फ्लास्क का ड्रॉप बाय ड्रॉप यू आर टेकिंग दैट सॉल्यूशन टू द इंडिकेटर विच इज बीइंग केप्ट एक्सटर्नली रखते हैं, हम उसे डाल के उसको देखते रहते हैं स्टेयर करके एंड व्हेन नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट द ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशंस आर रिमूव्ड एंड ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द इंडिकेटर। जब भी एंड पॉइंट आने वाला होता है और आप सॉल्यूशन रिमूव करते हैं रिएक्शन फ्लास्क के अंदर से, यू टेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर and put it into or it comes in contact with the external indicator, it results into a contrast color change, it results into a contrast color change that shows the commencement of end point. So this is the fundamental of external indicator. okay, हम लोग external indicator को any पेट्री प्लेट पे या पेट्री डिशेस पे भी रख सकते हो और वहाँ पे या फिर आप कोई इंडिकेटर आपका कोई पेपर भी हो सकता है, राइट, आपका पीएच पेपर, ओके, और आपका इंडिकेटर कोई भी इंडिकेटर सोक्ड पेपर भी हो सकता है, उसके ऊपर आप अपना ड्रॉप डालेंगे और इफ इट चेंजेस कलर देन वी विल कम टू नो कि हमारा जो एंड पॉइंट है वो आ गया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड can act as an external indicator during the titration of ferrous sulfate and potassium dichromate. पोटेशियम फेरिसाइनाइड एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, एक्सटर्नल इंडिकेटर, जिसका हम लोग बना के रख लेते हैं आपका मिक्सचर, ठीक है, सोल्यूशन, उसको बना के रख लेते हैं हम लोग एक्सटर्नली आइदर ऑन अ पेट्री प्लेट और पेट्री डिश एंड इट इज बीइंग यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ फेरस सल्फेट विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जब भी एंड पॉइंट आता है आपका तब आप उसके ऊपर डालते हैं आपके जो रिएक्शन मिक्सचर के ड्रॉप, इट इज बीइंग पुट अप ऑन द indicator solution and which is indicator solution potassium ferrocyanide, and the indicator solution immediately changes its color into contrastly opposite color and you come to know that end point has been achieved. Now the last method or the ultimate method, automated method of redox titration, knowing of end point in redox titration, is potentiometric method. As we all know, which is the thing which changes continuously in a redox titration? Which feature changes continuously in a redox titration? Oxidation potential. This reaction is altogether based on the number of changes in valency, number of changes in electron, which directly changes the oxidation potential or positive charges, oxidation potential of the reagents of the reaction. तो अगर हम oxidation potential measure करें time to time, then we will obviously able to know the oxidized state and reduced state in the medium, right? We will be able to know the number of oxidized state, number of oxidized species and number of reduced species at a particular moment of the reaction, at a particular time in a redox reaction. So this last method or last type of indicator, it is also type of indicator because it also indicates the end point. So this method is based on determination of oxidizing potential or reducing potential in the reaction. This is a physiochemical method, as we have already studied कि instrumental methods को हम लोग physicochemical methods भी बोलते हैं. You might have studied in unit 1 also. So this is a physicochemical or instrumental method which is applied where suitable indicators are not available or cannot be used because of some contraindications or chemical interactions etc. कोई indicator अगर for example any of the redox titrations के लिए suitable नहीं है, then we will very well easily go for potentiometric methods in which suitable indicators are not available as well as visual indicator fails or have a limited accuracy. या तो फिर किसी type of redox titration में suitable indicator available ही नहीं है altogether,
या फिर जो इंडिकेटर अवेलेबल हैं उनकी एक्यूरेट रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं, बिकॉज दे फेल टू शो कॉन्ट्राडिक्टरी कलर चेंज, कॉन्ट्राडिक्टरी कलर कंट्रास्ट एट द एंड पॉइंट. ठीक है, तो इस वो सारे इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं. दैट्स वाई वी गो फॉर पोटेंशियोमेट्रिक मेथड. ओके, potentiometric method is the last type of indicator, and it is a physicochemical indicator. So altogether we studied bromatometry. Bromatometry is a kind of redox titration which is based on two-step reaction, two-step system in which bromate is first converted into bromide in the first reaction, first step, and this bromide is again converted into bromine in the second step. तो ये जो system है bromate, bromide and bromine का, this is the gist of bromatometry method. This is the summary, this is the key of bromatometry method. और दूसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है, the thing which is to be monitored is bromatometry में the bromate solution, जो भी आपने लिया पोटेशियम ब्रोमेट एक्सेट्रा, पोटेशियम ब्रोमेट सॉल्यूशन या फिर ब्रोमेट सॉल्यूशन जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी इन एक्सेस, दैट शुड बी इन एक्सेस, सो दैट ब्रोमाइड आयन reacts with this bromate 2 times in the first reaction also and in the second reaction also. So this point is to be monitored, this thing is to be kept in my mind while performing this type of titrations. And second thing, the acidic medium which you are maintaining should be properly acidic. और वो कब होगा, जब आप अपना जो एसिड है, जैसे आपने यहाँ पर हम लोग HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट शुड बी इन एक्सेस अमाउंट. ओके, तो दोनों चीजें आपको एक्सेस में रखनी है, ब्रोमेट सोल्यूशन एज वेल एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl शुड बी इन एक्सेस सोल्यूशन. ओके, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, 6 हाइड्रोजन आयंस हैं, दैट मीन्स दैट सोल्यूशन इज इन एक्सेस. और तभी आपका जो कंट्रास्ट कलर चेंज है एंड पॉइंट पे, मीडियम एसिडिक रहेगा शुरू में तो आपका रेड कलर रहेगा, एंड द एंड पॉइंट इट विल गो टुवर्ड्स न्यूट्रल साइड, इट विल बी न्यूट्रल बिकॉज ऑल द HCl बीन कंज्यूम्ड अप. तो आपका एंड पॉइंट पे इट विल टर्न अप, entirely turn up, suddenly turn up into pale yellow color, and that will show the end point or equivalence point of the reaction, and you will very well able to know ki what is the concentration of the reactants and titrant as well as the analyte. तो इसीलिए अगर आप HCl अच्छे से रखेंगे, एक्सेस में रखेंगे, एसिडिक मीडियम रहेगा, प्रॉपरली एसिडिक रहेगा, तो रेड कलर आपको अच्छे से शो होगा, एंड द एट पॉइंट इट विल बी entirely change into pale yellow color or slightly yellow color. So you will be very well able to see that color change, that visible color change. If medium will not be that much acidic, then वो आपको color change distinguish करने में problem होगी. So these are the criteria, these are the important things which should be kept in mind, which should be remembered before proceeding on for any bromatometry titration. So this is all for bromatometric titrations. Thank you students, thank you everyone. I hope all of you have clear your mind regarding bromatometric titration. All of you have gained knowledge about bromatometric titration. Thank you all of you.